big utilization of models like LSTM when it comes to lots of resources utilization. But if I talk about these XGBoost like algorithm, so you can actually do good chunk of feature engineering, and you can actually make them work very better. So this is kind of suggestion that based on some good chunk of feature engineering, you can get better results with XGBoost and even the random forest like algorithm. So what are our results? If I talk about solar energy protection, so as I discussed multiple cases like solar energy, load protection, and the outage protection. So as you can see here that this is the prediction versus the ground truth value, and from now on we have predicted the next couple of intervals in the future. Right, same goes for load prediction. What kind of load was fast, and based on past pattern we predict in the future. Right, so this goes for your grid status as well. Right, so as you can see in the gray areas, the machine learning pipeline actually predicted that outages will be actually occurring in this particular one. But most important, usually you are seeing here the red legend, which is the high tariff. As in the start, I talked about the low tariff and the high tariff. So in the high tariff, National Grid is actually charging you more than the low tariff, right? So our smart flow, based on all these decisions, make sure that you get much better benefit of your resources. So this is the predictions of battery versus versus the actual with smart flow actions. So if I try to summarize these in terms of saving, in terms of cost, how much you will be actually saving. As you are actually using your solar energy for your day-to-day jobs, so you are actually saving on that interval as well. But if you utilize this smart flow, this AI intelligence, then you actually get to save additional 10 to 30% in terms of saving, right? So this is one benefit. Now, if I talk about the inputs, these inputs are the one we predicted through the AI algorithms. These are solar forecast, load demand, the utility of the tariffs. There are multiple tariffs actually in the country. So against every electricity provider like ICESCO, SEECS, there are multiple tariffs. So if you are in one location, then you might have different tariff rates. If you are in another location, you might have different. So based on these values from the cloud grid availability, so and smart flow limit. So if you actually want to trigger the smartness of this smart flow, so you can actually control this through your mobile apps as well. So if a user is actually aware of some decision, then he can actually utilize this smart flow limit as well. So combining all these predictions, our smart flow, the patented software of SkyElectric actually makes effort to give you as much benefit as it can. So what does a customer actually looks at his end? So based on all the stats that I talked about, that we save in PostgreSQL, Elasticsearch or SellerDB, and the cloud and the bill information. What we actually do is the backend part of our cloud, what it does it fetches the bills against every system, right? So that bill contains multiple values like how much electricity was actually exported. We at our end and our cloud knows that as well. So we kind of have the benchmark to test with as well. So based on the cloud stats, we actually tell the customer that how much solar energy was consumed, how much electricity was served during these outages hours, right? And how much electricity was actually exported through your system to the grid lab. So these are some values fetched from bills, some values from cloud stats, and based on these we
come up with your cost saving, how much actually you save benefiting from our solar system, right? So we tell a bit about your information, like how much solar was used, how much grid was used. So a detailed site contains the information about its savings as well. So now coming to the AI part, all these cloud stats. So this actually tells you about on what particular day what kind of weather there was. It also tells you about the amount of solar energy, amount of grid, and exported solar as well. Right, so this was kind of summary of our smart flow. How is it benefiting from these AI forecasts and doing the work on your hardware through this smart flow energy management system. Now the big data analytics. On a particular system, we have all kind of data analytics that are actually visible to our NOC team. So NOC team actually is looking at all this data, and based on this data, they actually make all the kind of decisions. Predictive data analytics. What I talked about is battery degradation, system faults, and predictive maintenance. Like when does your solar panel actually need the cleaning of your panels? System faults, like if your inverters temperature is actually rising, but you're not actually aware of that. But with time, it actually might go into state like that. It gets damaged. So, but we actually do this through predictive data analytics. We predict that a fault will be occurring on that particular system, and we inform our customers through the calls that you need to take this kind of action to make sure that your system's life actually get enhanced. So we talked about time series. Now let's talk about the computer vision, the site inspection and strategization. We have a computer vision based solution of situation like if a customer actually wants to install a solar system on their site, and then without visiting through this satellite, we actually make use of these image processing algorithms and predict that is that a viable space to install the solar on, and how much solar now, and in what kind of architecture we can actually install on. So this actually saves us quite the cost of visit and early planning as well. Now the chatbots, as I said that we have our own data from Jira service management, but this is data between automated systems, customers, and the dog. So whatever dog communicates between to the customer, so all of that steps are actually logged into that Jira service management. So what idea do we have in plan for this, creating this LLM based chatbot, that we utilize that chat between the customer and the log observer, and then through some automated bots like you have LLMs like Llama 2 or Falcon, right? So utilizing your own enterprise data and Jira service data to kind of hybrid chatbot for aiding the NOC's day-to-day operation. So what we actually plan is to do that we help out our NOC team through this AI conversation that they actually had in the past. So concluding all this stuff, we talked about big data, how at least our systems generate all the kind of data. We have smart flow which actually makes decision based on all this data. Where do they come from? They come from time series forecasting. We make sure that we, through the utilization of predictions, we get to make our smart flow work better and better. And we provide customer support through our NOC team, through our plan to further do it through computer vision and NLP solutions. So that is it from my side, and I will be
answering your questions. So feel free to ask any questions that you have. And if you, Mr. Asim also has an announcement to make about a new bootcamp. They have already had a bootcamp about AI, and now they are going to basically provide a bootcamp on large language models. If I talk about the earlier bootcamp, we had an advanced bootcamp that we started from scratch on Python programming. Then we started with the neural networks, computer vision, NLP, and some advanced topics that were covered in that particular bootcamp. So what was the goal actually? Making people capable to learn the mathematics around these machine learning models, and how does the industry is actually getting those solutions. So we, in collaboration with NUST, held this boot camp. Now we are actually planning our second boot camp that is actually based on these LLMs. So you will be actually getting to know about this second LLM based boot camp through the NUST team, inshallah. So you can actually plan accordingly. So any questions from today's talk? सर ये हर यूज़र के लिए आप अलग डाटा मतलब अलग मॉडल ट्रेन करते हैं क्योंकि पैटर्न डिफरेंट है हर यूज़र का तो प्रेडिक्शन Yes, हर we यूज़र actually train one particular model for one system. Our system is actually our customer, which is sending us the data. So for one solar system, we have one model that actually encapsulate all the time series in it. So is this model on the server or at the user end? Currently, this is on our cloud, but there are some restrictions from hardware end. We were actually working with this NAV framework from Elixir programming language. Elixir is a functional programming language, so this kind of had some restrictions on the hardware, which we tried to solve, but now we are actually moving towards the Python-based hardware programming. Suppose करें आप interviews कर रहे हैं for new machine learning engineers and these are your candidates. What qualities are you looking for? What technologies are you looking for in these students or in these prospective employees of SkyElectric? Yeah, if I talk about the new candidates, we actually started hiring a few interns a few months back. So what I was actually looking into those candidates. So what students actually do is that they try to learn all kind of stuff. They might want to dwell into databases, they might delve into the machine learning models, or they might want to go into the DevOps. But what I am as a manager expecting from my employees, that I actually first thing first, I actually look into the intent of the students, the attitude. What kind of attitude that student actually possesses? Is he actually willing to learn? Right? What does this willing to learn mean? There is some help from our side when actually we are actually communicating with our student, and there is another intent from your side. So what? Secondly, I actually expect from you guys that I want you to actually understand the basics of anything. If you are a backend developer, if you are a machine learning developer, as I am a machine learning developer, I would talk about the ML side. Now, what do I want from you? I mentioned lots of lists of models, right? But what do I want you to know? I want you to know that you understand the basics of a particular model, right? If you understand the basics of XGBoost, random forest, then I would expect you to come on to a series of models and move on to these transformers, right? So if I tell you about this LLM based bootcamp, what we actually expect is some background of your mathematics. Now what does this background actually mean? There are models available through Kaggle, through GitHub. I know everybody just pulls in, just runs some Jupyter notebooks, and they get things done. But in the depth of these models, they do not know what actually is happening there, right? So I actually want you to understand that how the forward pass, how the backward pass actually happens, and how this loss calculation and
or this through the iteration model actually learns, right? And how about the mathematics, right? If you actually know the mathematics about basic algorithms like neural networks, CNNs, LSTM, then you can actually move towards the transformers, other latest state-of-the-art model. So what I need you to do is learn the basics and understand actually what happens down the road, right? This would be my suggestion to all of you. So basically, you should know the basics, and then the company would be willing to groom you towards higher level of understanding. So I think that's a summary of your. So any more questions? It's not relevant to machine learning. Actually, when you get all the data, then how do you inform your customer? It's a huge customer base. So if there is any fault or any anomaly on at the customer side on the grid system or the grid, how do you inform them? Is there with the I was actually mentioning alert, mention about the alerts. There are two types of alerts. One is warning and the other is fault, right? You as a customer, you are actually getting notifications of your mobile device as well, right? No, come towards the knock part. If a knock notices actually the severe kind of alert on your system, then what do? They try to solve it through the remote commands that is sent to the system through the APIs, right? The knock team is quite huge in number, right? So they are available 24/7. So they tried their best to help through these remote commands, or second option they have that they call you on your contact numbers, right? Then they ask you either to do some steps or from our side it is required that we need to visit you and solve it for the betterment. So if anyone has classes, they can go for to attend their classes, and anybody those who have questions there, they can sit and ask Mr. Asim. So After you smart flow, software it can save you 10% more system, solar system that has not been with smart flow, right? Does not. That particular system may go into the negative as well. Like it doesn't know when the grid would be available, right? How much solar you may be producing or demanding. आप 10 से 30% इजाफी सेविंग दे रहे हैं आपका सिस्टम कस्टमर को कितना महंगा पड़ता है एक आम कोई लेने की सूरत है आप Yes, that's a very. If I'm paying let's say 50% more than a common ordinary system and saving 30% as a customer, is it worth it? Yes, it is actually worth it, right? How? There is one side of application that I delivered Right. today. The other aspect is after sales, right? ठीक है. Other companies that install solar system at your homes do not provide the after sales, right? What happens at your system is actually happening to you, and you are the only one responsible for your system. Now we are owning your system. You are owning actually our customers. That is why a quite heavy number of NOC personnel are there to help you out. So they are actually available 24/7. Even on the holidays we are available. Right. सर उसकी कॉस्ट नहीं पड़ती आपको जो मॉडल आप हर दफ़ा ट्रेन करते हैं? अच्छा, या वो कॉस्ट किस तरह से पड़ती है? कॉस्ट मतलब आप हर यूज़र के लिए ट्रेन कर रहे हैं दोबारा मॉडल, वो भी बिग डाटा पे जिस तरह हम बता रहे हैं. अच्छा, इसकी अप्रोच क्या आती, ठीक है? अच्छा, बिग डाटा कब यूज़ करते हैं और अप्रोच क्या आती, ठीक है? अप्रोच क्या आती, ठीक है? हमने अप्रोच एक क्यों रखी, ठीक है? हमारा एक एक्चुअल गोल क्या है? उन मॉडल्स को लेके जाना उन एम्बेडेड डिवाइसेस के ऊपर, ठीक है? व्हाट वी नीडेड इन आवर पाइपलाइन एंड वो हमने क्लाउड के ऊपर सॉल्व कर लिया है, ठीक है? हमने लेटेंसी भी अचीव कर ली है. अब उसको जब उसको एम्बेडेड डिवाइसेस के ऊपर पोर्ट करने का टाइम आएगा वो भी कर लेंगे. उसका ये एक गोल था. तो बिग डाटा यूटिलाइज किस तरह करना है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है 2 सालों की, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके जो पैटर्न्स एक्चुअली रिक्वायर्ड हो अगले कुछ दिन की फोरकास्ट ली वो पिछले 2 सालों से आ रहे हो. शायद आपके लिए पिछले 2 सालों का डाटा रिक्वायर्ड नहीं है, पिछले शायद 3 महीनों का डाटा यूज़ कर लें, ठीक है?
बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट वी केम अप विद समथिंग जिसमें हमारी इम्प्रूवमेंट्स हो सके। तो आप रीट्रेन नहीं, आप जस्ट फाइन ट्यून करते होंगे ना Fine tune. फॉर यस। Yeah. तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सारे पीछे वाले वेट्स जो हैं वो सारे अपडेट हो, थोड़ा बहुत जस्ट फाइन ट्यूनिंग हो जाती है। हम अगर You don't need to retrain from the scratch. नहीं सर वो डाटा फिर चेंज होता होगा ना, विंडो शिफ्ट नहीं होती होगी जिस तरह सर कह रहे हैं। थोड़ा बहुत चेंज होगा, यस। इट इज एक्सपेक्टेड टू चेंज, यस राइट। बार बार ट्रेन करने का मकसद ही यही है, ठीक है। अगर आपने कंसेप्ट का नाम सुना हो डाटा ड्रिफ्ट या मॉडल ड्रिफ्ट का, क्या होता है कि डाटा आपका चेंज हो जाता है और मॉडल भी विद टाइम डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। अब जो डाटा कल था गर्मियों में था सर्दियों में बिल्कुल नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल आपने 6 महीने पहले अपना मॉडल ट्रेन किया था, वो मॉडल आपके किसी काम का नहीं है इन फ्यूचर, ठीक है। अब सर्दियों में आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। इवन आप हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता इसके बाद आपके पैटर्न बहुत हद तक चेंज हो जाते हैं और कस्टमर के एंड पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। अब मैं आपको अगर बताऊँ कि पीवी का डाटा किस तरह होता है, तो वो उसका एक काइंड ऑफ फिक्स स्टैटिक साइकिल्स होता है, लेकिन जो उसका लोड होता है तो कस्टमर अपने एंड से कुछ भी कर सकता है। ही हैज़ लेवरेज टू एवरीथिंग, राइट। उसके पैटर्न्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों की ग्रैनुलैरिटी के हम अब कब ट्रेन करें, ऑल ऑफ दिस केम फ्रॉम सम स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 साल का डाटा तो 2 साल का डाटा यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। वो सर वैसे एक कि आपने कहा है कि सारा डाटा स्टोर हो रहा है, मतलब उसकी टाइम लिमिट क्या है, टाइम स्टैम्प मतलब पर सेकंड या सेकंड में कुछ टाइम स्टैम्प्स 4 से 5 ऐसा अच्छा। कोई डिफाइन होता है या डिफाइंड होता है बट पर्टिकुलर केस की, ठीक है। अब ये जो पीवी का डाटा है, लोड का डाटा है, ठीक है। अब हमारे पास एक ये लाइब्रेरी थी कि हम इस तरह के मॉडल्स ट्रेन करें जो कि हमें एट ग्रैनुलैरिटी ऑफ 10 मिनट्स अपने रिजल्ट्स दे दें एक फोरकास्ट के, ठीक है। लेकिन उसकी एक अलग कॉस्ट हो जाती है, ठीक है। अब 10 मिनट्स की ग्रैनुलैरिटी के ऊपर ट्रेन करेंगे तो आपको आपके अच्छा ये जो स्मार्ट एक्चुअली इसको कम से कम 1 दिन की प्रेडिक्शन चाहिए होती है, उसकी बेस के ऊपर ये डिसीजन रहता है। अगर आप 10 मिनट्स की ग्रैनुलैरिटी के ऊपर ट्रेन करेंगे तो आपका मॉडल्स के पास डाटा सैंपल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। करंटली वी हैव 1 आवर ग्रैनुलैरिटी, ठीक है। सर ये बिग डाटा में फिर कैसे आता है करंट 1 आवर? अब बिग डाटा में इस तरह आता है। अच्छा, आपने जब R&D करनी होती है ना अपने किसी भी सिस्टम की, ठीक है। अब R&D की मैं आपको एग्जांपल दूं कि पहले हमारे पास जो सिस्टम थे वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर थे। नाउ वी आर मूविंग इनटू जापानीज मार्केट एंड US मार्केट। उसमें क्या होता है कि उनके सिस्टम और उनकी जो इन्वायरमेंट है और उनके जो डिस्कोज या टैरिफ्स वगैरह है ना वो बिल्कुल हमसे डिफरेंट है, ठीक है। और अगर मैं US की बात करूँ तो उधर एक्चुअली उनका प्रॉब्लम ही और है। US में बिजली तो नहीं जाती, जापान में बिजली तो नहीं जाती, ठीक है। उनका मसला लोड शेडिंग नहीं है, उनका मसला हाई टैरिफ को यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो जिस हाई टैरिफ में इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज कर रहे थे ना वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ गई थी। पर्टिकुलरली दे ट्राई टू हैव बैकअप इन दैट हाई टैरिफ टाइम। तो उस डाटा सेव करने की ज़रूरत क्या है, R&D की काम होता है और भी इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, ठीक है। अब जब ये एक्सपेरिमेंट को स्टडी कर रहे थे, आपको इन सारे एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने के लिए सारे का सारा डाटा चाहिए था एट सम इंस्टेंस। उसके बाद आपने एक डिसीजन लिए कि जब मुझे 1 साल का डाटा चाहिए, 6 महीने का डाटा चाहिए, 3 महीने का डाटा चाहिए। सर वो तो फिर भी नहीं बनता, मतलब अगर आप घंटे के बाद एक रीडिंग लेते हैं बिग डाटा में कैसे आती है, मतलब महीने की थोड़ी सी रीडिंग बनती बिग है। डाटा एक सिस्टम का नहीं है ना, बहुत सारे अच्छा, सिस्टम मतलब मल्टीपल डाटा सेट वो सेंट्रलाइज सर्वर में भी जाके वो EV का भी है और वो एक सर्वर सेंट्रलाइज होता है, ठीक है। अब जी। फिर आपने एक पर्टिकुलर सिस्टम का डाटा निकाल के लेके आना है, वो किस तरह लेके आएंगे आप? सॉरी आपके पास क्लाउड के अंदर 10,000 सिस्टम्स हैं, जी। ठीक सिस्टम है। मतलब यूजर्स का डाटा ना, जी, सब- यूजर्स जी। एक 16 सिस्टम के घर लगा उसको मैं यूजर कहूँगा यहाँ पे। जी। एक यूजर का डाटा उस रिव्यू में सेव होता है, दूसरे का भी इधर होता है, अब 10,000 का भी इधर होगा, ठीक है। 10,000 यूजर्स जब 1 मिनट की या 1 घंटे की ग्रैनुलैरिटी पे डाटा एंटर कर रहे होंगे तो कितना ज़्यादा डाटा जी होगा, वो भी ठीक है। इस तरह से बिग डाटा भी बन जाता है। ठीक। और IoT डिवाइसेस एक्चुअली जनरेट कर रही थी हर सेकंड्स में, हर मिनट में, ठीक है। ये भी 1 आवर एग्रीगेट हम लगा के डाटा निकाल के लेके आ रहे हैं। ये 1 मिनट में हमारे पास डाटा है, ठीक है। एक्चुअली 1 मिनट में ये रैंडम मिनट्स में होता है, हो सकता है 1 मिनट में मल्टीपल टाइम रिपोर्ट हो जाए, ठीक है।
सर दूसरा ये है कि आपने जैसे मॉडल की ट्रेनिंग और ये सब चीज़ें कर ली हैं, इसमें फिर आप ऑप्टिमाइजेशन के एल्गोरिथम्स कौन से यूज़ करते हैं? ऑप्टिमाइजेशन क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल मॉडल्स है, ठीक है, अगर मैं सिर्फ टाइम से ईजी बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं जिक्र करूँगा एम्बल फ्लो में, थोड़ा सा मैंने आइडिया वहाँ पे दिया था कि हम किस तरह मॉडल रजिस्ट्री वगैरह कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आ गए, ठीक है, फॉर एग्जांपल वन एक्सपेरिमेंट वुड बी सेट ऑफ हाइपर पैरामीटर्स, ठीक है, हाइपर पैरामीटर हमने एक्चुअली क्रैक किस तरह की है। अब जैसे कि कोई यहाँ पे कोई एक बात कर रहा था, हर यूज़र के लिए डिफरेंट पैटर्न होंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका जो मॉडल हो ना वो तो एक काइंड ऑफ लिमिटेड सेट ऑफ हाइपर पैरामीटर्स होंगे ना, तो हम क्या करते हैं कि तकरीबन 100-200 इस तरह इन्हें सिस्टम्स निकाल के उनके ऊपर अपनी हाइपर पैरामीटर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब वो 100-200 एक्चुअली आते हैं कहाँ से, 10,000 सिस्टम से, वो मल्टीपल साइज ऑफ सिस्टम्स होते हैं, मल्टीपल लोकेशंस, ठीक है, उसमें इस तरह के एट्रीब्यूट्स हम फिगर आउट करते हैं कि ताकि उन टेस्टिंग सिस्टम्स के अंदर एक्चुअली डाइवर्सिटी अवेलेबल हो, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर हम ट्राई करते हैं कि अपनी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की, ठीक है। प्रोडक्शन में एक्चुअली हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं कर रहे होते, हमारे पास एक्चुअली एक प्रॉब्लम था जिसको हमने इस तरह से सॉल्व किया। You make a chunk of this data available to the overall research community publicly? Yeah, Would it be convenient for you guys? it would be convenient. I have thought about this at my end. So we are actually making efforts to to come up with solutions that can actually help the community. As you are actually getting to know about these boot camps, these are actually coming up with a vision. These are not some random thoughts. These are coming up through a vision which actually I've been discussing since very long. So these are in our plates as well. So we'll be discussing how we can actually make actual utilization towards research as well. So this is quite a huge data. Yes. Is it public right now? No, Are it you is going between to? our cloud. So apart from that, building energy consumption पे आप लोग काम करते हैं, occupancy based building energy consumption, basically जो non residential based buildings हैं, institutional buildings होगी, commercial buildings होगी, और उनको automate करने के लिए, energy उनकी consumption को कम करने के लिए, जितनी भी lightings हैं, जितनी भी air condition HVAC systems हैं, air flow rate को अगर हम कम करें तो building energy काफ़ी reduce हो सकती है consumption। अच्छा, इसमें इसी तरह का प्रॉब्लम रिसेंटली हमारे पास आया था। वी हैड बीन डिस्कसिंग कि हम किस तरह एक्चुअली यूजिंग एआई यूजिंग डाटा हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ बल्ब यूज़ करूँ तो मैं एक्चुअली मैं इलेक्ट्रिसिटी कितनी हद तक बचा सकता हूँ, ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड एक चीज़ है, ठीक है। आप अब हमारे पास इतने हाई एंड कस्टमर्स भी हैं जिनको मेगावाट्स में बहुत ज़्यादा ह्यूज साइज ऑफ सिस्टम लगाए हुए हैं, तो लोड एक्चुअली अगर एक सिवियरिटी से बढ़ जाता है, ठीक है, तब हमारा नॉब एक्चुअली उसको बता रहा होता है, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं बता रहे होते। सर हम ऑक्यूपेंट सेंट्रिक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, एक बिल्डिंग है उसमें ऑक्यूपेंट्स बेस्ड आपके जितने अप्लायंसेस हैं वो ऑक्यूपेंट बेस्ड हों, अगर एक रूम के अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल हैं, अब एक ह्यूमन है उसके अंदर से एक मेटाबॉलिज्म की वजह से हीट रिलीज होती है, तो उसकी सेंसिंग की बेस पे ऑक्यूपेंट सेंट्रिक बिल्डिंग्स और उसका कंट्रोल्स हैं, जितने भी अप्लायंसेस हैं, स्पेशली जो आपकी बिल्डिंग एनर्जी कंजम्पशन होती है वो HVAC सिस्टम्स की मोस्टली होती है, ठीक है, तो HVAC सिस्टम्स की भी अभी यहाँ पे भी इतने HVAC सिस्टम्स लगे हुए हैं कि इसमें उनका फ्लो रेट है उनको कंट्रोल करके ऑक्यूपेंट सेंट्रिक किया जाए, ना कि एक ही फ्लो रेट पे चलता जाए सिस्टम, जितने ऑक्यूपेंट्स हैं उसकी बेसिस पे इनका फ्लो रेट और इनके जितने पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो, लाइटिंग्स हैं ऑक्यूपेंट सेंट्रिक हो, ना कि एक बंदा रूम के अंदर है और सारी लाइटिंग्स चल रही हैं। Not the scope of SkyElectric. नॉट द स्कोप ऑफ SkyElectric। मैं इससे एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। ये आप डॉक्टर आपने से पूछे हैं, जी, ये उनके इस domain तरह ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है कि अगर एक कमरे के अंदर एक बंदा है तो एसी की कूलिंग कम होनी चाहिए, 50 बंदे हैं तो ज़्यादा होनी चाहिए, दैट मेक्स सेंस, राइट। और अकॉर्डिंगली
जो है वो एयर फ्लो कहाँ पे होना है, अब कुछ ऐसी आ रहे हैं जो आपको पर्सन स्पेसिफिक जज करके वो एयर फ्लो को गाइड करते हैं कि अगर पर्सन राइट पे है, तो दीज आर ऑल IoTs, ठीक है। वो सेंसर्स आपको फिर लगाने पड़ेंगे, आपको पूरा जो बिल्डिंग है वो सेंसर्ड करनी पड़ेगी, एग्जैक्टली सर। ठीक है। तो आई थिंक का डाटा हमने So this would actually come at a cost. आपको जो सेंसर की कॉस्ट होगी ना वो अलग से बड़ी होगी अदर देन सोलर सिस्टम, ठीक है। मैं आपको थोड़ी एक एग्जांपल देता हूँ। हम अदर देन दिस वेदर प्रेडिक्शंस जो होंगे हमारे पास थर्ड पार्टी से आ रही होती हैं, ठीक है। हमने एक सोल्यूशन फिगर आउट करने की कोशिश की थी कि हम अपने पैनल के साथ एक कैमरा लगा दें जो कि एक्चुअली कैप्चर कर रहा होगा स्काई की पिक्चर, और उस पिक्चर के अंदर क्लाउड्स वगैरह एनालाइज करके कुछ फिगर आउट करेंगे उसकी फोरकास्टिंग क्या हो सकती है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ की एक कॉस्ट थी, ठीक है। अब जब भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो आप इस तरह की कॉस्ट को माइंड में रखते हैं कि इससे क्या सारे यूजर्स इसको इसके लिए पे करना चाहेंगे, क्योंकि SkyElectric सिस्टम अभी भी बहुत कॉस्टली है, ठीक है। मार्केट में अगर आप जाके देखें और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स को देखें, SkyElectric को देखें, बेस्ड ऑन ऑल दीज बेनिफिट्स, ठीक है, AI एंड अदर स्टफ एंड नाउ आफ्टर सेल्स, ठीक है। इन सारी चीज़ें इसको ज़्यादा वैल्यूएबल बनाती हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। और आप इस तरह की चीज़ें अपनी प्रोडक्ट के अंदर इन्वॉल्व करेंगे तो उसकी एक अलग से कॉस्ट होगी। ये डिपेंड करता है एक्चुअली आपकी मार्केट पे। बेसिकली सर आप लोगों का एम तो एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करना है। वो ये बात करें Clean आप energy। उसमें वो नहीं डाल सकते, और सेंसर उसमें डालेंगे, डाला जा सकते हैं तो वो तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन आपने कास्ट को भी देखनी है। कास्ट क्या यूजर पे करना चाहता है, अगर वो नहीं करना चाहता फिर तो बनाने का कोई फायदा भी नहीं है कि आप एक चीज डिजाइन कर लें, उस पर सारी रिसर्च की एक्सपेंडिचर कर सर लें। अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट हम इतने एक्सपेंसिव सेंसर्स यूज ना करें। एक्सपेंसिव नहीं, आप एक जब टाइम सीरीज जो वीडियोस मॉल्स में, फॉर एग्जांपल एक मॉल की एग्जांपल लेते हैं, जी उनमें सिर्फ 24/7 HVAC सिस्टम रन हो रहा होता है, और इररिस्पेक्टिव कि वहाँ पे कितने लोग हैं। अच्छा, इसमें एक और इशू आता है, आप वीडियो की बात करें उसमें आपका प्राइवेसी का भी इशू आ जाए। क्या आप कमरे में हर वक्त 24 घंटों का आप कैमरा ऑन रखना चाहेंगे? मैं नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। ये तो हाँ वो है, उस केस में है, बट स्टिल मतलब आप का जो ये जो बात चल रही है ओवरऑल जनरल रूल के तहत चलिए, और वो जो टॉपिक है वो है ग्रिड, सोलर ग्रिड के ऊपर, कि उसको उनकी मीटरिंग किस तरह होती है, और साथ में यूजेज को किस तरह यूटिलाइज, जो यूजेज है वो किस तरह एफिशिएंट बनाया जा सकता है, तो वो उस But definitely it is a great opportunity. अपॉर्चुनिटी है नो डाउट, लेकिन जो आप उसको फिर डिफरेंट एंगल से देखेंगे इस मामले में, और उसके डिस्कशन भी डिफरेंट साइड पे आ जाती है। जी। तो एनीवन एल्स? आपने वो फाइन ट्यूनिंग का बताया था चैटबॉट्स के लिए LLMs, तो करंटली कोई स्पेसिफिक LLM है या वेरी करते रहते हैं एज पर यूजर? अभी क्योंकि ये बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में है, तभी हमारे पास एक सोल्यूशन है रैंक बेस्ड, ठीक है, where we have stored our documents converted into vector embeddings, ठीक है। वो हमने डेटाबेस के अंदर रखी हुई है, उसका इंक्वायरी करके हम अपने चैटबॉट यूज़ कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट फाइन ट्यून, ठीक है। फाइन ट्यूनिंग के लिए जैसे आपको बता रहा था कि जीरा का हमारे पास डाटा है, तो हम कस्टमर इश्यूज लॉग करते हैं, और उससे रिलेटेड जितनी भी डायलॉग वगैरह या कम्युनिकेशन विद दैट कस्टमर होती है हम लॉग करते हैं। तो जो रियल वर्ल्ड का डाटा होता है ना, काइंड ऑफ जंक होता है, इसको फिर आपको गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी काम हो रहा है, बट वी हैव चैटबॉट्स बेस्ड ऑन दैट। लेकिन ये प्री ट्रेन डाटा किसी पे ऑलरेडी भी होंगे या इस फ्रॉम स्क्रैच आप लोगों के डाटा पे ही होंगे टोटली, जो भी मतलब आइदर इंक्लूडिंग फाइन ट्यूनिंग या इंक्लूडिंग सब कुछ जो भी करंटली होंगे? एक्चुअली क्या अपनी